Pankaj, and if you have just joined me on YouTube, namaste and welcome to this week's Happy Minds. It's after a break of a few weeks, I think 3 weeks, we are back again. And those who have joined me for the first time, welcome to this family of Happy Minds. I'll share a bit about what we are, but if you're attending for the first time, you can just type in first, and maybe you can also type in the city you're from. Hmm. What does Koja say? Koja saying, Namaste, sir. Now I'm feeling like it's a Saturday morning. Ask me, मैंने कितना miss किया है. हाँ, Priyanka, wow, Om Prakash, Rahul Jagtap. Lovely to see all of you. Namaste, Ankit, Sachin, Raghunath, and all of you have joined me from wherever you have joined me. Lovely to see all of you this very morning. All those who have joined me on YouTube, welcome to Happy Minds. Welcome to Happy Minds. So जो लोग जिन्होंने पहली बार join किया है, just wanted to share this with you, what Happy Minds is all about, and some of you have joined from today only. आपने आज पहली बार join किया है, your friends have recommended, शायद आपकी family ने आपको बोला है, God knows, maybe आपने social media में देखा है तो आपने join किया. So welcome one more time, namaste and welcome to this week's Happy Mind. This is Happy Minds number 1195. So when we say 1195, it's been a long time. And जब Happy Mind चालू किया था तो 27-28 साल पहले, and here we are after 27-28 years. We are still going strong, and every week we take pride. All of us who attend, who have been there with me for last so many years, we take pride in being a part of this beautiful family of seekers. So हम लोग we kind of call ourselves seekers. हम लोग सीख करते हैं a better way of living. हम सीख करते हैं a better way of maintaining our relationships. हम लोग सीख करते हैं a better way of dealing with the world. हम लोग सीख करते हैं a better way of communicating, a better way of doing business. In whatever we are involved in, क्या उसका एक अच्छा तरीका हो सकता है? Because the fact of life is कि there is a way to do things, and then there is a better way to do things. So वो better way की खोज, वो तलाश, वो एक quest है अंदर से, and I think that's the beauty of humanity, and that is what separates us from any other creation on this planet. कि हम ही एक species ऐसे हैं जो एक better way, एक अच्छे तरीके की खोज कर सकते हैं. No other creation, no matter how beautiful, how lovely that creation is, वो अपने आप से एक अच्छा जीने का तरीका ढूंढ नहीं सकता. Whether it be a pet dog of yours who's at home of yours, the pet of yours वो चूज नहीं कर सकता कि वो और अच्छा पेट कैसे बने, right? वो हमारे अधीन है. हम जो सिखाएंगे वो सीखेगा. हम जो जिंदगी देंगे वो जिंदगी को जीने पे वो मजबूर होगा. But as humans, ये काबिलियत हमारे अंदर है कि हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैन वी लिव अ बेटर लाइफ? एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज yes, and that's what the beauty of being a human is, that can we live a better life than yesterday. So this quest of Happy Minds is कि क्या हम हर हफ्ते आके हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं, and together can we all grow. So here we are. So हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, all of you, okay, namaste everybody, from the Chandra Mohans of my life to the Neela Tantis of my life, all of you, welcome to Happy Minds. Chalo, theek hai, one more time. So we start with meditation, we start with a bhajan, we start with some time which we devote, to our creation. And it's also wonderful to start our morning with meditation by being by ensuring that your mind is the most productive. और सुबह का meditation बहुत powerful होता है because you have not bombarded your mind with many things. So at that time, if you start with meditation, the mind becomes more potent. So we start with meditation, then we go into a round of some stories, some success stories of people who have sent the stories to me. Chrysalis, जो मेरे students हैं या जिन्होंने Happy Minds किया है, वो कुछ stories भेजते हैं उनकी life से, जहाँ पर कुछ achievement हुआ है, जहाँ पर उन्हें कुछ success मिली है. And then I have some sharing, and then also people have some questions and some sharing from their side. So that's what Happy Minds is, 1 hour 15 odd minutes, and that's what we do. So shall we start this very morning?
Sholoji, welcome some latecomers who have joined in. Namaste, Rajesh. I'm not saying you're a latecomer, but but I'm seeing वो संख्या बढ़ती है ना of people who log in, so I come to know. अच्छा ये 7-5 वाले हैं, ये 7-10 वाले हैं. You know, some people they just come in at 7:10, and then suddenly by 7:15 you have a lot of people. So मेरी request है आप सबसे. When 7 o'clock means 7 o'clock, then come at 7 o'clock. I think somewhere you miss on the meditation side. चलिए. Uh, one sad news which I want to share with all of you: we have lost Chrysalis Radhesham Bhattar, and the news came to me a day before, and it was very shocking for us to know that he's no more with us. And the last almost around 12 years, I have known him. He joined us somewhere around 2012, 2013. He was a part of my business batch, and uh, I have lovely memories of him. Uh, the way he was, the way he would conduct his business. A very simple man, a very friendly, a very he would always have a smile on his face, and that's what I wrote about him. That whenever I think of him, I automatically the smiling face would come to the forefront, and very gentle, very soft spoken in terms of who he was. So it was a kind of a personal loss the moment I came to know of his demise, and too early, gone too early. But our prayers are there with his family, and Om Shanti is we pray. His entire family is in our prayers. So just wanted to share this because I have known him, and he's a Chrysalian. He has been with us. So I thought of sharing this with you. Let's have a few success stories with us. The first one is from Amit Chelar, and he says, Namaste, sir. You're doing great in SAS. Just started with a new shop at Baner. And all this is possible because of your teachings and guidance. And thank you so much for everything. And this story has some special, you know, place in my heart, is because I know Amit for the last almost around 7-8 years now. And when he became an entrepreneur, he started with his bakery, and then from there he shifted into a much more difficult terrain of uh, opening a store with all the grocery items, and then he wanted to create a difference in terms of the kind of quality he would be offering. So उसने बड़ी मेहनत करी, and then he joined the business program a year back, and from there he moved on to open his second store. So from a person who was kind of scary or scared, जो एक सहमा डरा हुआ एक entrepreneur था, from there to now having a strong belief about his future, I think this step of opening another store in his domain is a giant step for him from what I know of him. And I thought this is a story worth sharing. So Amit, congratulations. And I'm sure whenever you listen to the HM, my best wishes are there with you. And I'm sure this is the beginning of the series of stores you will open over a period of time. Another one is by Sandhya Yadav and Sangeeta Kaushik, and the Chrysalians and the husbands and the families are all Chrysalians, and they did skydiving, and they said Sandhya ने बोला कि आप लोगों ने स्पेन में किया, and that was 10 years ago. 2014 में हम लोगों ने स्पेन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, and the moment she mentioned कि आप लोगों ने स्पेन में किया, तब से मेरे दिल में थी कि मैंने वो मिस कैसे कर दिया, and my mind went to 2014. I said, हाँ 10 साल हो गए. And we 90 of us, we went from India to Spain, and we made a world record there, where we dived the maximum number of people diving in 1 hour, and we did skydiving there. So she says 10 साल देर में, लेकिन तब से मन में था, and we did it. And this is the second story. Third is from Sagar Sakure, and he says, sir, it has been a while. I've got in touch with you, but I'm not behind in implementing your teachings. And he says, sir, मैंने आपसे एक बहुत अच्छा idea pick up किया during my Rasamasti program, the business program of yours. And that was that I will give respect to everybody who visits our office. And there are some things which I shared with him, and he has written that. I will skip that to save time. He says, anybody and everybody who would come to our office, we would ensure that the person's visit is respected. So चाहे वो interview देने आ रहा है, चाहे वो vendor आ रहा है, कोई भी आ रहा है. And as a result of that, the results we are seeing are incredible. First of all, people get awed when they receive
that respect from our side, even for attending the interview. And lately, the candidates who came for the interview, even if they have been rejected, he says, they leave the office in good faith, and some have even started referring candidates to us. And the last line was very powerful. He says, we have spent so much of time and money on portals like Naukri and to even to hiring agencies, but no one could help us the way this approach has helped us, where respecting people who come for interviews, and they going, whether they are accepted, rejected, we send them back with lots of love and respect. And somewhere in the market, the name has kind of, over the last many months, the name is in the market that you should go to this company. I was not selected, but you should go. And he says, I thought I should share this with you because this has changed the entire way of doing business at our end. Thank you very much. So thank you, Sagar, for sharing this with us. And God bless. Oh, Amit is there. He says, wow, great, Amit. Congratulations on you opening your second store, and God bless you for that. Shaliji. Let's come back to you all. So my question to all of you is, bhai, kaise ho aap log? How are you all? चलिए, बहुत दिन हो गया. I have not heard from you. आप लोग कैसे हो? Let me read a few responses here. Great. हाँ, चलो टाइप इन करो. कैसे हो? Great. मस्त. जतिन बोल रहा है मस्त. Okay. Best. कमलेश बोल रहा है ग्रेट. खटा खट. जकास. पीसफुल. ये इसको तो संतोष को पीस ही लगता है लाइफ में. क्यों शादी करी तूने? हाँ, पीसफुल ही लगता है इसको. बढ़िया. पूजा. Wonderful and energetic. Great. Type in all those who are there, and you can just type in as to how you're feeling. बहुत बढ़िया. Great. Fabulous. Lovely. I'm also doing great. टक टकाटक. नरेश का तो आना है. I'm back after a beautiful time with couples in Europe, and we had, I think, one of the most beautiful programs. I'm sure जो मेरे साथ गए हैं पहले और जिन्होंने सुना है तो कहेंगे सर आप हर प्रोग्राम के बाद ऐसे ही बोलते हो कि this program was the best. But trust me, every program has its own flavor. So इस बार का भी एहसास बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त हुआ. And I don't know who all are there, who were there with me in एहसास. I'm sure they would vouch for it. मुझे मालूम नहीं HM में कितने हैं उसमें से जो एहसास में मेरे साथ थे. But if you were to ask me, from all that which I do, I just don't do things because I got to do them. I do them because somewhere वो यहाँ से निकलती है चीजें. And एहसास is one thing which comes from all my heart. Because वो program ही ऐसा है, it's a program about love and romance and quality time and bond and this beautiful relationship called marriage. And होता ना कि somewhere some flavors are only for that program. So if you come for my life, it's a very different experience of being on the spiritual side. If you come for Life 360, which is just around the corner, and that program, if you were to come for, you will see a different flavor of mine. If you come for Arasamasti, which is a business program, you will see a very different flavor of me, because everything requires a different approach. And I feel ये होना बड़ा जरूरी है for all of us. Naren was he was a part of the SR's batch, and he says difficult subject handled beautifully by MG. He says ये शादी करी ना, ये this concept called marriage, it's a difficult subject. He says I feel it's a beautiful subject made difficult by us. It's the most beautiful thing which could have happened to us, getting married, right? But somewhere, some of us, we have made that beautiful subject difficult. And उसको फिर उस difficulty को handle करने के लिए मुझे beautifully कुछ पेश करना पड़ता है. And that's how it is. So, but coming back, okay, namaste, Balraj. What is
I didn't say. MG what was at his best and different avatar. हाँ मैं वही बोल रहा था कि मेरा अवतार जो है ना अलग अलग होता है. एहसास में अलग अवतार, माई लाइफ में अलग अवतार, लाइफ 360 में अलग, एंड बिजनेस प्रोग्राम में अलग. और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए. एंड यू हैव टू हैव द मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड विच अवतार टू यूज वेयर. हम करते हैं ना. आप जब ऑफिस में होते हो, यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग विद पीपल देयर. आप जब घर में होते हो, आपका एक डिफरेंट तरीका होता है. ऑफिस में जाके यू नो, if you were to see, okay, let me take a name from here. Hmm? Let me take a name from here. Okay, let's say, अब चलो लेट्स टेक अ नेम ऑफ संतोष. चलो संतोष है आज, ये पीसफुल संतोष को बोलते हैं. तो संतोष जब ऑफिस जाता है तो मे बी ही हैज अ टीम ऑफ पीपल whom he is leading. I don't know what he is doing there, but he is leading a team of people. तो जाके ऑर्डर देता है, ये काम करो, ये काम क्यों नहीं हुआ, रिपोर्ट लेता है. You know, and then there are people who are kind of डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, and maybe he's the boss around. He is calling the shots. वो डिसाइड करता है क्या काम कब होना है, कैसे होना है, and he is the one who's leading from front. तो ये इसका बात करने का तरीका अलग होगा. बट व्हेन ही कम्स होम, जिंदगी बदल जाती है. He comes to know who he is. Then he's the one who's listening to orders from everybody around. तो वहां का डीलिंग अलग होता है. कस्टमर से डीलिंग करता है, ही इज डीलिंग इन अ डिफरेंट वे. घर आता है तो घर में जब अपने बच्चे से बात करता है, मे बी इफ इज गॉट अ स्मॉल चाइल्ड हु इज 6 months, हु इज अ फ्यू मंथ्स यंग चाइल्ड, तो उससे कैसे बात करेगा? उस बच्चे से उसी की भाषा में बात करेगा ना. सो यू विल नॉट टॉक लॉजिक, यू विल नॉट टॉक इन अ वेरी structured manner. आप उस बच्चे से उसी की भाषा में, अले 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 बच्चे, that's the way you will talk to the child, right? Because that needs that kind of communication. When you're with your friends, you will have a different kind of communication. You'll have a different approach and different behavior. When you're with your school friends, तो अलग ही एक approach होगा. तो हम सबके भी अलग अलग अवतार होते. And so when people tell me that, अरे आप एहसास में, because that program needs that kind of an approach, and they're kind of shocked. Oh, MG sir, ऐसा. Because I make them have the most awesome time. I make them do things which they would have never done in the history of their lives. And then they're in a shock because they've seen me in my business program. तो मेरे business program में जो requirement होता है वो वैसा होता है. Now I cannot bring that एहसास flavor in the business program. I cannot bring the एहसास flavor in the spiritual program. It deserves a different approach. So, but coming back, I had a beautiful time. चलिए, कुछ सवाल हैं आप सबके लिए मेरे पास. तो पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि what makes you happy? चलिए, what makes you happy? Let's, आज का subject है what, it's on happiness. So I have a question for all of you. What makes you happy? Waiting for your answers. Sir, we were waiting for you to take HM. It has been a long break this time. Normally I don't take break, but this time I took a break. What makes you happy? Meditation, walking, waking up early and going for a run, workout, love. What is this love? Love, respect, love, and own achievements. Okay. Good close relations make you happy. Okay. What makes you happy? Good close relationships. To see my family happy, I'm happy. Okay. किसकी family है? Your family. Okay, ठीक. मोतीलाल जी कह रहे हैं, if I live in the present, I'm happy. Kamlesh says, if I have a very productive day, I'm happy. Productive in what sense? Okay, अच्छा business हो गया, अच्छा काम हो गया. Being with my daughter makes me happy. Satyajit says, satisfaction of work, जो कभी नहीं होता है. Completed targets, what planned, I'm happy. Great health, satisfaction.
बिग बैंक बैलेंस, ये है मुद्दे की बात। व्हेन आई एम अराउंड यू आई एम सो हैप्पी। अरे खुद दिल खुश कर दिया नरेंद्र, क्या बात है। व्हेन आई एम अराउंड यू। रुचि बोलेगी मेरे बारे में तो कभी ऐसा बात नहीं किया है। हाँ, व्हेन आई हैव पॉजिटिव सराउंडिंग आई एम हैप्पी। थोड़ा बटरिंग तो बनता है, हाँ ठीक है। अरे मैं बिना बटरिंग के सब दे देता हूँ। when things go with your life, ठीक है, जब आपके हिसाब चीज होती है, anything we do with pleasure, money, health makes me happy, doing things I love to do, spending time, ठीक है। चलो ठीक है, जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, बट जिन्होंने लिख लिया, एक और क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी? spending time with grandchildren, great. What makes you unhappy? आपको, आप नाखुश कब होते हो? देखो, अब उसका ऑपोजिट मत लिख देना। when things are unruly, when things are different from expectation, when things are not happening as expected, when I can't achieve my targets, mm-hmm. when things are, when things don't happen in a way which I want, when we are not able to achieve what we are supposed to, things not going my way. Oh, when reality is different from expectations, Ishamash. When I hurt someone, not able to fulfill my family's choices, things not going my way. मैंने आपसे दो सवाल किए, you can keep on typing, I'll just move on. First, I asked you what makes you happy. So you had a list of things which you wrote. This is what makes me happy. Then I said, what makes you unhappy? This is what, if this happens. Now, before I delve more into it and take you deeper into it, I just want you to understand this. I just build the entire framework of this concept called happiness because ये इतना important subject है, but इतना simple और सरल है कि आप खुद ताज्जुब करोगे कि यार ये हमने मिस कैसे कर दिया, इतना सिंपल था, हमने मिस कैसे कर दिया। And all those who have been with me for Life 360, or maybe you have been with me for my life, you will be able to connect more. And I want to use this moment of mine to share with all of you कि इनफैक्ट मैं कल एक रील बना रहा हूँ जिसका रील का सब्जेक्ट ये होगा कि रील्स डोंट चेंज लाइव्स। आयरॉनिकली रील के थ्रू ही बता रहा हूँ कि रील्स डोंट चेंज लाइव्स, बट आजकल द इंटायर कॉन्सेप्ट इज दैट we will watch it on YouTube and we will see reels. I'm not saying reels are not good, but reels एक entertainment है, एक time pass है. So you watch some humor, you watch some information which is there, but ask yourself, आपको कितना याद रहता है? वो जब दोबारा कभी वो रील देखते हो तो कहते हो हाँ ये सुना हुआ है, ये देखा हुआ है, but that's it. So the retention capability of ours is very limited, and as a result, whatever we watch, whether it be on YouTube, whether it be on a short form or long form, it doesn't remain with us. But then many of us, we have kind of restricted our growth and learning. And especially I'm talking about growth. अगर मस्ती करनी है, entertainment करना है, time pass करना है, then reels are good. You watch YouTube, you go on social media and spend your entire life there, if that's what you want. But if you really want growth, मेरा आप सबसे कहना है, there is no substitute, and listen to me again, there is no substitute to a structured and a disciplined training regime. उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं। और अगर मेरी बात का तुम्हें हिट नहीं हो रही है तो go and ask people who are maybe who are in the defense forces, right? People who are doctors, people who are successful professionals, whether it be the lawyers, anybody who's into a profession which is a very successful profession. तो आपको समझ में आएगा उनको देख के कि
they have put in hours and hours and hours of work behind, and they got trained over a period of time. तो वो जो साधारण लोग थे, साधारण लोग को ठोक ठोक के ट्रेनिंग दे दे के असाधारण बनाया गया, and they became extraordinary guys. And that's why we look up to them, because now in our eyes they are different, but they were also once upon a time ordinary people like you and me. So they did not get trained. Imagine the army getting trained on reels. कि वो YouTube में देख के वो कह रहा है अभी हम मार्च पास करेंगे, YouTube में देख के वो सीख रहा है कि हम टेनिस कैसे खेलेंगे. You cannot. तो उसके लिए एक structured, as I'm saying, there is no replacement, there's no substitute for a structured and a disciplined training regime. And one of the greatest habits you can build in your life is to continuously, constantly work on yourself to make yourself better. इससे बढ़िया आदत हो नहीं सकती कि आप अपने आप को लगातार अच्छा, किसी न किसी एरिया में आप अपने आप को अच्छा बनाते रहो. और अच्छा बनाने का मतलब क्या है? You have to go into a regime, you have to go into an environment. उस एनवायरनमेंट में आपको जब बार बार बोला जाएगा और आपको कुछ कराया जाएगा, आपके इनसाइट्स भी मिलेंगी, काम भी होगा, आपसे करवाया भी जाएगा, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू इवॉल्व. एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से हैप्पी माइंड्स उनको ज्यादा हिट करता है. हैप्पी माइंड्स इज 1000% मोर इंपैक्टफुल, इफेक्टिव ऑन पीपल हु हैव बीन थ्रू माय लाइफ लीडरशिप और लाइफ 360 प्रोग्राम. और मैं क्यों बोल रहा हूं अपने प्रोग्राम के बारे में? बिकॉज आप मुझे सुन रहे हो ना. तो जब जिन्होंने वो मेरा स्ट्रक्चर प्रोग्राम किया हुआ है, उसके बाद जब वो मुझे एचएम में सुनते हैं, दे आर एबल टू ऐड ऑन टू व्हाट दे हैव ऑलरेडी गॉट. और जिन्होंने नहीं सुना है, जो सिर्फ मुझे हैप्पी माइंड्स में सुनते हैं, तो उनको ये टल्ले मिलते हैं. वो ना पैंट फटती है तो एक टल्ला लगता है, एक पैच मिलता है. उस पैच से आपको हल्का सा ज्ञान मिल जाएगा, जैसे आज मिल जाएगा, पिछले एचएम मिला होगा, आगे मिलेगा. बट वो लाइफ में कहाँ फिट होना है, वो लाइफ में कहां पर किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है, उसकी कनेक्टिविटी, उसका एक कॉन्टेक्स्ट आप मिस कर जाते. So I'm just sharing this with you कि if you have not done Life 360 with me, मेरा program, तो आप करो, and then you will see how powerful the happy minds will become for all of you. And I see that when I read the comments, I can feel the impact on people who are already Chrysalians. And all the Chrysalians जो मैं कह रहा हूँ, बात सही है कि नहीं है? हाँ बोलो, yes or no, बात जो बोल रहा हूँ, it is making sense or not what I spoke. And they have done program 10 साल पहले, 15 साल पहले मेरा program करा हुआ है, and then they come and they are in happy minds, and we will see the impact is so very different. एक तो क्या है, मुझे समझते हैं, मेरी लैंग्वेज समझते हैं, मेरे इंटेंट को समझते हैं, मेरे इवन मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को समझते हैं, because this is alignment. I'm not saying this is the world's best, I'm just saying this is me. You have come to listen to me, then I can just talk about myself because आप मुझे सुनने आए. क्या बोल रहे हैं? 100%. After attending the program, you're seeing the way of life just changed. Absolutely. I was from 115th batch, and today it is 119. नहीं, ये तो HM है. My whole family has done Life 360. हाँ Rajesh, your entire family. I'm a part of the upcoming Life 360. हाँ Santosh, you are a part. हाँ अभी संतोष ने बोला तो मुझे just want to share with you. Our batch is coming up this month, and I want to apprise you of the batch. It's coming on. It's on 21st, 22nd, 23rd of June. अगर आपको लगता है you should be a part of it, you want to make your happy minds, आप ये invest कर रहे हो ना 1 घंटा मेरे साथ हर Saturday को, and if you have not been a part of Life 360, then I strongly recommend मेरे साथ आ जाओ. I'll change the way you look at life. Come with me for those 3 days, and trust me, उसके आने वाले आपके जितने भी साल होंगे ना, आप उसमें कुछ हंगामा करके जाओगे, ये बात तो पक्की है. बट और उसके अलावा ये हैप्पी माइंड्स का जो फ्लेवर है, ये अलग फ्लेवर आपको हिट करेगा. Everything which I'll say will have a different meaning. Everything which I'll say will have an expanded impact on your mind.
ये बात पक्की है. So, यतिन, when did you do the batch? बहुत साल हो गए ना, आई थिंक 15 साल हो गए कब. if I if I remember, you are from Gujarat. I still remember the way you motivated me when I was very beaten down, and while I was losing love of my life, my wife. Oh yes, I remember, Yatin, and I'm so happy that you are constantly, continuously. I think 2010 or 2009. I don't know which year you were a part of the batch, if I am not mistaken. So, somewhere, if you were to see the people who have been there, so मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हैप्पी माइंड्स का इम्पैक्ट 10 गुना कर दो by having a very strong context to whatever I'm saying. Om Prakash, I'm just having your mic on. You want to share something? आप शेयर कर सकते हो. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को. And just give you a few minutes to share. हाँ, ओम प्रकाश, आपका माइक ऑन है. हेलो. हाँ, आप बोल सकते हैं ओम प्रकाश, या फिर आप उसको ऑफ करिए. गलती से आपने चालू किया वो, ओके, गलती से भी माइक ऑन कर लिया. चलो ठीक. Oh, 2005, Yatin, yeah, you were 20 years, 20 साल हो गए अपने को. Oh my God. That's phenomenal. हाँ, life ऐसे निकलती है. चलिए, great. Let's come back to the subject which we had started. And just want to end this, whatever I shared with you, I want to end on this note that tell your loved ones, tell your friends, tell your relatives, your office team. We have uh, I think Naren Goel has sent his entire top team for again for Life 360. The previous batch also he had some of his team members coming in. This batch also he's got 4-5 team members coming in. We have a lovely group getting ready. Around 60-70 people have already registered. We're looking for some nice Chrysalis coming out. एक अलग bunch निकलेगा, बहुत जबरदस्त हंगामा होने वाला है. But coming back to the subject which we started. So happiness जो है, मैंने पूछा what makes you happy, and I asked you what makes you unhappy. बड़े आश्चर्य की बात है, आप देखोगे ना कि अगर कोई इंसान खुश है और ज्यादातर खुश दिखता है, हैप्पी दिखता है या हैप्पी रहता है, तो कोई ना कोई उसको आके पूछेगा, भाई तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? कि तो why are you so happy? Why do you stay so happy? What makes you तेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं? एंड जो उससे बात नहीं कर सकता ना, वो आपस में बात करते होंगे. यार, भगवान ने इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी है, तभी ऐसा रहता है. एंड I'm sure you would have come across such situations or such people, or maybe you've also made a comment like this. When you see somebody happy, तो automatically होता है यार इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम. The way life is right now, if you are happy, people have issues with it. If somebody is happy, people have issues with it. If somebody is miserable, people are okay with it. गौर फरमाओ जरा मेरी बात. If people are happy, if someone is happy, people have issues with it. And if someone is miserable, people are okay with it. तो कहीं ना कहीं हमारे देखने के नजरिए से हम बता रहे हैं कि being miserable is okay and being happy is not okay. क्योंकि हमारी समझ में कहीं हल्का सा फर्क है. Let me just build on that understanding of yours. How many amongst you want to be happy? Just give me a yes or a no. No, I don't want to be happy, sir. ये भी हो सकता है, I don't know. Because somebody can choose to be miserable, right? So I want to be miserable. It's okay, your choice. अभी मैं क्या कर सकता हूँ? But how many of you want to be happy? Just type in yes. It's a very silly question, I know. Nobody will say no, I want to be miserable. But I just want to, फिर भी confirm कर लेता हूँ. एक आध को निकल जावे, मालूम नहीं. हाँ? So just type in why or yes or. So you all want to be happy, right?
करो करो, टाइप इन करो. Now, don't write for everyone. No, everyone wants to be happy. You ask your neighbor. तुम्हारी गाड़ी देख के वो खुश नहीं है. So don't write for everyone. No, everyone wants to be happy. I'm just saying, I'm asking about you. Do you want to be happy? The question is this. Yes, why not? ठीक है. कोई ये भी लिख सकता है सर, और ऑप्शन क्या है, ये भी सही. ठीक है, ओके. मैंने आपसे बड़ा सिली क्वेश्चन पूछा, डू यू वांट टू बी हैप्पी. तो इसका मतलब क्या है, हैप्पीनेस तो चाहिए ना सबको. तो क्या इसको मैं पकड़ के रख दूं, मतलब ये तो चाहिए चाहिए, मतलब ये तो है. आई वांट टू बी हैप्पी, आई डोंट वांट टू बी मिजरेबल. तो मैं इसको लॉक कर दूं. शुड आई लॉक इट? चलो. अब मेरा एक और सवाल. अब मेरा एक और सवाल. पहला सवाल था कि डू यू वांट टू बी हैप्पी, एंड यू सेड यस, वी वांट टू बी हैप्पी. अब माय सेकंड क्वेश्चन टू, डू यू हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ? Anybody here who has no problems? Anybody here who has no challenges? या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैं? मैं आपकी वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं. और जो वाइफ बैठी है, आपके हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूं. डू यू हैव प्रॉब्लम्स, यू हैव सम चैलेंजेस इन लाइफ? आई डोंट नो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ. हो सकता है आप में से कोई ऐसा कोई देवदूत बैठा हो जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, लाइफ एकदम एकदम जैसा चाहते हैं वैसे चल रही है. और कुछ बोल रहा है, प्लेंटी है सर. सो यू हैव चैलेंजेस इन लाइफ, यू हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ. ओहो. बिकॉज प्रॉब्लम हो सकते हैं ना. We are saying the problems are there for some, the problem can be getting up in the morning. For some, the problem can be me. Right? Listen to me is a problem. For some, some किसी को ऐसा बिठा होगा माँ ने, वो देख एचएम सुन, तेरे को बोला मैंने सुन, तो उसके लिए वो माँ प्रॉब्लम है, या उसके लिए मैं प्रॉब्लम हो गया हूँ. For some of you, the problem can be your boss. For some, the problem can be a customer who's not paying the money. For some of you, the problem is the weather. For some, the problem can be the government. For some, the problem can be neighbor's wife. इतनी खूबसूरत कैसे? So all of us have problems. Agreed or not? ओहो. मैंने पहला सवाल पूछा, do you want to be happy? All of you said yes. Then I said, do you have problems in life? All of you said yes. ये तो गंभीर सिचुएशन हो गई. हाँ जी, ये तो गंभीर सिचुएशन हो गई जी, कि प्रॉब्लम्स भी हैं, घनों प्रॉब्लम्स हैं, और खुश भी होना है, खुश भी रहना. सो एक बात तो आपको हिट हुई होगी बिना मेरे कहे, दैट हैप्पीनेस हैज नो कोरिलेशन विद प्रॉब्लम्स. आज का एचएम समाप्त. एक बात तो आपको हिट होनी चाहिए, या हो गई होगी, कि लाइफ में अगर हैप्पीनेस है, हमें चाहिए, एंड हमें हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स भी है, तो अगर हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स है तो हम हैप्पी नहीं रह सकते, इसका मतलब फिर लाइफ लॉन्ग हैप्पी नहीं रहोगे. आई एम जस्ट गिविंग यू अ शिफ्ट हियर, दैट यू कैन बी हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम्स का आपके हैप्पीनेस का से कोई लेने देना नहीं है. बिकॉज ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहने वाली हैं. जब तक आप ऐसे खड़े हो, वर्टिकल खड़े हो, तब तक प्रॉब्लम रहने वाली. राइट और नॉट? द ओनली टाइम यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, जब आप ऐसे निपट जाओगे, लेट जाओगे, जा रहे होगे अपनी आखिरी आखिरी यात्रा में, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब सब निवांत शांत. तभी बोलते हैं ना पीस. तो मैं इसको बोलता हूं संतोष को, डोंट से पीसफुल. वो पीसफुल वहीं पीस मिलेगी, तेरे को बता रहा हूं. तो इट्स ओनली व्हेन वी आर डन विद लाइफ, देन वी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. जब तक ऐसे खड़े हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहने वाला है. चाहे वो कुछ सेल्फ होती है क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. Some problems are given by the world, some problems are health problems, some are from relationships, some are financial. ये रहने वाले, जब तक हम खड़े हैं कुछ ना कुछ होने वाला ही है. Tell me if I am right.
प्रॉब्लम रहने वाली नहीं रहने वाली? जब तक, एब्सोल्युटली यतिन, जब तक है जान हमें प्रॉब्लम तो रहने वाली। तो अगर आप बोल रहे हो कि प्रॉब्लम है इसलिए मैं दुखी रहता हूं, तो फिर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो जाने वाली नहीं है। तो आप कह रहे हो प्रॉब्लम है, और ये मैं कह रहा हूं जाने वाली नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो अगर हमें खुशी भी चाहिए, तो हमें इस खुशी का प्रॉब्लम से कनेक्शन हटा देना चाहिए। आज के बाद से आप वो कनेक्शन तार हटा दो कि प्रॉब्लम्स का मेरी खुशी से कोई लेन देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है यार। ये चलते रहना दो, ये चलते रहेगा, प्रॉब्लम्स का ये तो लिस्ट है। और हम तो माहिर है प्रॉब्लम क्रिएट करने में, ये हम करते रहेंगे, क्रिएट लफड़े करते रहेंगे। अरे 100 करोड़ टर्नओवर हो गया, शांति से बैठो। नहीं नहीं, हमें 200 करना है, लो भी और लिस्ट लो प्रॉब्लम्स की। हाँ, तो आदमी शांत नहीं बैठता, वो अपनी प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का उस्ताद हो गया है, मास्टरी कर ली है, पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया उसने। तो वो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे। तो अगर उसने खुशी का कनेक्शन प्रॉब्लम से कर दिया, तो फिर वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो आई एम जस्ट सेइंग डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। जब डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या हम प्रॉब्लम्स के साथ भी खुश रह सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन आपको तीसरा बात। थर्ड क्वेश्चन, तो क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा, क्या हम अपनी प्रॉब्लम के साथ खुश रह सकते हैं? नाउ दैट इज द चैलेंज बलराज। तुमने लिखा नो। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, ये डिस्कनेक्ट कर दो, प्रॉब्लम और हैप्पीनेस का कनेक्शन को काट दो ना। क्योंकि प्रॉब्लम तो कभी नहीं खत्म होंगे यार। अच्छा, टेल मी, हु डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम? एक इंसान बताओ मुझे दुनिया में जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। बलराज, टेल मी। एवरीबडी इन द वर्ल्ड, जिसको तुम सबसे कामयाब मानते हो, वो भी उसके पास भी प्रॉब्लम्स है। जो सड़क में बैठा भिखारी है, उसके पास भी प्रॉब्लम्स। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है विच हु इज फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स। सो हम कौन से निराले हैं, हमारे पास भी प्रॉब्लम्स की लिस्ट रहने वाली है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ये बात पक्की है। लेकिन हम खुश भी रहना चाहते हैं, वी वांट टू बी हैप्पी, ये बात भी पक्की है। तो अगर ये खुश रहना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने खुशी का कनेक्शन प्रॉब्लम्स से काट देना चाहिए। लेट्स डिस्कनेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो आई एम आस्किंग अ थर्ड क्वेश्चन, कैन वी बी हैप्पी विद ऑल आवर प्रॉब्लम्स? बिकॉज ये तो जाने वाली नहीं है। The moment you say, yes, I can be happy with all my problems, then we can do something about happiness. कि हाँ, अब खुश कैसे रहें, चलो। लेकिन हमने मान ही लिया है कि यार खुशी और प्रॉब्लम जो है, ये इनका रिश्ता है। जब तक प्रॉब्लम है, खुशी नहीं आएगी। इन दोनों का 36 का आंकड़ा है, और ऐसा मान ही लिया है। तो फिर मेरे आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं। बलाज कह रहा है, सर माफ कर दो मुझे, मेरी गलती से मिस्टेक हो गई है। ये समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमने जो, मैंने आपसे पूछा ना, वाई वी आर अनहैप्पी, वाई वी आर हैप्पी, आपने बोल दिया ये। अब मैंने पूछा आपसे वाई वी आर अनहैप्पी, तो आपने लिस्ट बताई। तो आपने सारी लिस्ट अपनी प्रॉब्लम्स की बताई, और आप कह रहे हो कि ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं दुखी हूं। और मैं उसी अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना चाहता हूं, जहां पर आपकी नाखुशी का जो सारा सोर्स है, आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं उसको काटना चाह रहा हूं अभी। एंड द मोमेंट यू कट इट, then this happiness is free of all your problems. Then we can think about how do we be happy with our problem. ये तो होने वाली है। और दूसरी बात बोलता हूं आपको, सबसे बढ़िया बात, जो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ भी खुश रह सकता है, जो अपनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी खुश रह सकता है, वो है सच्ची खुशी। जिसकी लाइफ में कुछ नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो गया है, फिर वो खुश है, तो कौन सी बड़ी बात है यार? कौन सी बड़ी बात? जो प्रॉब्लम्स हैं, सब चैलेंजेस चल रहे हैं, उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, उसका लाइफ में कुछ ऐसा डिजीज आ गई है जो उसका कोई क्योर नहीं है, उसके बाद भी हंसने की ताकत रखता है, तो वो है सच्ची हंसी ना। उससे बड़ी, उससे प्योर, उससे पावरफुल हंसी क्या होगी, स्माइल क्या होगी? जो इंसान सफर कर रहा है फिर भी स्माइल करने की हिम्मत रखता है, उससे बड़ी स्माइल क्या हो? तो सेम वे आई एम सेइंग, विद ऑल योर प्रॉब्लम्स,
Can we be happy? And if the answer is yes, then understand कि तीन दुश्मन हैं खुशी के. ये तीन दुश्मनों को तुमने भगा दिया ना, तो फिर तुम देखो, you will have happiness more than ever before in your life. ये तीन दुश्मनों को आपने भगाना है. So three habits which you have to, and they're simple. तीन दुश्मन आपके, और तीन दुश्मन को भगाने के लिए तीन हैबिट्स आपने बिल्ड करनी है. तो पहला दुश्मन आपका जो है, जो आपकी खुशी का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुशी का, वो है रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट, एंड मोर सो रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट मिस्टेक्स. आपके जो ये अफसोस है अतीत के बारे में, आपका जो अफसोस है अबाउट द मिस्टेक्स विच यू मेड इन द पास्ट, दैट इज एनिमी नंबर वन ऑफ हैप्पीनेस. और इसका कोई इलाज है तो मुझे बता दो कि भाई सर, ये एक मुझे मालूम पड़ा है, एक साइंटिस्ट ने एक निकाला है तरीका कि हम अपने पास्ट में जाके हम उस गलती को ठीक कर सकते हैं. पास्ट में जाके हम जो काम करने से चूक गए हम उसको कर सकते हैं. अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, हम भी चले जाए भी आपके साथ. पास्ट का तो कोई इलाज ही नहीं है, जहां तक मेरी समझ बोलती है कि देर इज नो ट्रीटमेंट, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वी डूइंग समथिंग अबाउट द पास्ट. तो सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुशी का है आपका अतीत में जाना और उसमें अफसोस करना कि ये मेरे से नहीं हुआ, ये मेरे से गलत हो गया, ये मैं चूक गया, ये मेरा बिजनेस हाथ से निकल गया, ये मेरा इसने मेरे को ये मेरी ये एक्सपेक्टेशन पूरी हुई. जो पास्ट को लेके आपका अफसोस है. सो all regrets of all the mistakes which you made in the past. Enemy number one. Enemy number two of your success. आपका भविष्य में जाके डर के वापस आना. You being scared about your future. So you think about your future. इसका मतलब you go to your future and you come back scared. You come back anxious. You come back jittery. ये खुशी का दूसरा दुश्मन. और आप जाते हो भविष्य में, आप चले जाते हो कि कल 2 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, फाइनेंशियली मेरा क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप्स का क्या होगा. यू गो टू द फ्यूचर एंड यू कम बैक, and you come back not happy. You don't come back strong. You don't come back organized. You come back scared. You come back anxious. ये दुश्मन नंबर 2. और दुश्मन नंबर 3, बड़े 3 सिंपल दुश्मन है लेकिन खतरनाक दुश्मन. थर्ड दुश्मन आपका, तो ये जो एंजाइटी है ना, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, ये कहां से निकलती है? जब आप अपने प्रॉब्लम को देखते हो और उस प्रॉब्लम को लेके आप चले जाते हो उसमें बैठ के फ्यूचर में. तो कोई भी प्रॉब्लम आया, आप उसमें बैठे और खड़ाखड़ 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 निकल लिए फ्यूचर में, और उस प्रॉब्लम के साथ घूम घाम के वो जो कांड करता है, जो आपको तकलीफें देता है, वो सब तकलीफों को लेके आप वापस आ जाते हो. यू कम बैक टू द प्रेजेंट. एक है आप घोड़े में बैठे हो, टकाटक टकाटक जाते हो पास्ट में अपनी गलतियों का भंडारा लेके कि अरे यार ये मेरे से गलती हो गई, ये मेरे से चूक गया, ये मेरे से नहीं हुआ, वो पूरा बोझा लेके आते हो. और एक घोड़े में बैठ के जाते हो फ्यूचर में और वहां से पूरा डर लेके आते. ये कैसे होगा? और तीसरा दुश्मन आपका, जो आपकी खुशी का तीसरा दुश्मन, और वो दुश्मन है जब आप इनग्रेटफुल होते हो, अनग्रेटफुल होते हो. यू हैव इनग्रेटिट्यूड. आप कृतज्ञ नहीं होते हो वर्तमान में उनके लिए जो आपके पास है. यू आर अनग्रेटफुल टू थिंग्स, यू आर अनग्रेटफुल टू पीपल, यू आर अनग्रेटफुल टू योर प्रेजेंट करंट लाइफ. 3 दुश्मन.  。  , 。  , । 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 – 3 दुश्मन.
अरे भाई जिंदा हो कि नहीं मेरे साथ, कि कहीं और चले गए हो? हम्म। आई थिंक द मोस्ट पावरफुल हैप्पी माइंड इज दिस फॉर यू। सिंपल है, बट आपकी लाइफ में वो सब देने के काबिल है जो आपको खुश कर सकता है। और मुझे बताओ, खुशी से ज्यादा कोई चीज है क्या? व्हाट अमाउंट ऑफ मनी is more than happy, being happy? Tell me, what amount of name and fame is bigger than being happy? What house, what big house is bigger than being happy? The biggest of materialistic pleasure which you have will fall small in front of your happiness. बस हम वैल्यू नहीं कर रहे हैप्पीनेस की, यही पर प्रॉब्लम है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। Happiness knows its own value, but we don't know the value of happiness, and that is why we are losing out on it. We are not recognizing it. तो तीन दुश्मन खुशी के। और अगर मेरी बात से अगर सहमत नहीं हो तो मुझे बोलो क्यों सहमत। और अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो फिर मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल अक्षय, और मजे की बात यह है, अक्षय ने सही पॉइंट बोला। इसे सर मजे की बात, दुश्मन के पीछे भाग रहे हैं अपन, और पकड़ में भी नहीं है। तीन दुश्मन है जिसको आपने ध्यान रखना है, तीन दुश्मन। Anandi, you want to share something? You can unmute yourself and then you want to share something. I'll give you a minute if you want to. You can unmute yourself if you want to share something. तो तीन दुश्मन है हमारे जिसमें, तो आप आई जस्ट सेइंग दैट यू गॉट टू बी कॉशियस, यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो घोड़े लेके भागो मत टू योर मिस्टेक्स एंड कम बैक विद रिग्रेट्स। घोड़े लेके भागो मत विद योर प्रॉब्लम्स टू द फ्यूचर, बिकॉज प्रॉब्लम is not right now. The problem is what you have in your mind about the future. And that problem you come back with anxiety, with fear, and that takes away, that robs you of the happiness. And third thief, very powerful thief, बहुत खतरनाक चोर है। और वो दुश्मन जो है आपका, सबसे पावरफुल दुश्मन जो है आपका वर्तमान में, जो आपके साथ है, जो आपके पास है, उसके प्रति यू आर नॉट ग्रेटफुल। अगर मेरे साथ बैठे हो ना अभी आप लोग, व्हाट यू डोंट हैव, टेल मी। आई डोंट नो हु ऑल आर सिटिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग, क्या तुम्हारे दो हाथ चल रहे हैं, ये उंगलियां चल रही है? इज दैट नॉट ग्रेट? तुम्हारे पैर चल रहे हैं, यू कैन गेट अप फ्रॉम अ चेयर एंड यू कैन सिट डाउन, यू कैन वॉक, यू कैन रन। You have a heart which is beating. It is, there is no clogs, no vent shed, no अंदर वो उसमें डाला हुआ है कुछ। You're not taking any medicines. Is it not great? You have eyes which can see, दांत है चबा पा रहे हो। अरे जिसके सर में बाल है वो खुश हो जाओ, बाल है। There's so many people जिनके बाल नहीं। There's so many who cannot see. There's so many who cannot hear. There's so many who don't have hands. So many who cannot stand. तो कभी ऐसा होता है ग्रेटिट्यूड, द मोमेंट यू आर ग्रेटफुल, थैंक यू गॉड, दैट मोमेंट यू आर हैप्पी। The morning you get up and you see next to your bed, in your bed, you see your wife, you see your husband, and if you see your child, you see your दो चार तीन चार जो आपके, जो सबसे नजदीक के माँ बाप, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, भाई बहन, जो भी आपके नजदीक के लोग हैं, सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं और देखते हो, भगवान ये सब ठीक है। You recognize what you have, and that's the moment you're happy. तुम्हें recognition का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो जो है तुम उसको, तो जो दुश्मन है ना, वो दुश्मन तुम्हें जो है उसको, उससे तुम्हें उसको देखने से रोक रहे हैं। And you got to be careful of these enemies. What you don't have, यार, tell me. तुम एचएम सुन पा रहे हो, इसका मतलब यार लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फोन है, इंटरनेट है,
तुम अंग्रेजी सुन पाते हो, समझ पाते हो, हिंदी सुन पाते हो, समझ पाते हो. So many of you can speak few languages. Is it not being grateful? I can go on, I can make a list of hundreds of things which you can be happy. Hundreds, thousands of things which you can be happy. But तुमने वो recognize ही नहीं किया. So, three things be careful about. Three habits. Don't go to the past and bring back regrets. So what do? Build a habit. The habit is not stopping yourself from going to the past. Past तो जाएंगे जाएंगे. But वहां से कचरा लेके नहीं आएंगे. Like I shared in one of the HMs, you go to the past and you bring back the learnings. You will bring back the juice. If you remember the HM which I spoke about, you get the juice from there. तो पास्ट जाएंगे, पास्ट में देखेंगे कहां पर हमसे गलती हुई, वहां से रिग्रेट का बैग झोला लेके नहीं आएंगे, वहां से ताकत का, वहां से सीख का, लर्निंग्स का झोला लेके आएंगे. व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक? वो तो हम करते नहीं, लेकिन वहां से हम जो है अफसोस लेके आए. और फ्यूचर भी जाने से रोकना नहीं है. गो टू द फ्यूचर. तो जो प्रॉब्लम है उसकी प्लानिंग करते हैं ना, ये प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे बाहर. अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व करेंगे फ्यूचर में जाके, और उस सॉल्व प्लान को लेके आएंगे प्रेजेंट में. और थर्ड हैबिट जो आपने करनी है, तो दो हैबिट मैं आपको बिल्ड कर रहा हूं, तो दुश्मन से आपने कैसे लड़ना है. पास्ट के हैबिट के लिए गो एंड लर्न. नोट पैड लिख के बैठो. गो टू द पास्ट. अच्छा, ये मेरे जो है ये कस्टमर नाराज हो गया, ये कैसे नाराज हो गया, चलो लेट मी राइट डाउन, ये क्यों मेरे से, मैंने इसमें से क्या सीखा. ये रिश्ता टूट गया, इसमें से मेरी गलती हुई, तो इसमें से मैंने क्या सीखा. ये मैंने इसको पैसे दिए, ये पैसे इसने वापस नहीं किए, अब मैंने इसमें से क्या सीखा. यू लर्न, you write down, and you make your present very strong. One habit. Second, you go to the future, you plan, you take the guesswork out of your future. Anxiety khatam. You give a plan to your mind, it becomes relaxed. दूसरी आदत. And तीसरी आदत, अपने आप को वर्तमान में झोंक दो. अपने आप को वर्तमान में सरेंडर कर दो. मतलब अपने आप को एकदम ऐसा निछावर कर दो वर्तमान में. यू काइंड ऑफ लुटा दो अपने आप को वर्तमान. इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि वर्तमान भी तुमसे कहे यार मजा आ गया. एंड दैट्स व्हेन, जब तुम अपने आप को लुटा देते हो, जब अपने आप को तुम पूरा निछावर कर देते हो, विदाउट द स्ट्रिंग्स ऑफ द पास्ट रिग्रेट्स, विदाउट द फियर एंड एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, जब आप अपने आप को प्योर फॉर्म में निछावर करते हो, दान दे देते हो वर्तमान में, देन दैट वर्तमान ऑफ योर्स इज कॉल्ड अ प्रेजेंट. Then it becomes a gift called present. Then it unfolds many beautiful things for you. And then you are happy because you're giving your best. Oh, oh, oh. आया कुछ पकड़ में. हेलो. Love you, Renuka, for connecting with me on this. So ensure that you push yourself, all of you, and let's take this learning and take this to the next orbit, and ensure we live a wonderful life. कैसा रहा आज का HM? Love you, Mansi. With all the problems, let's be happy. खुश रहेंगे. प्रॉब्लम्स तो जाने वाली नहीं है, तो फिर खुशी को क्यों उस पर निछावर कर दे. लेट्स बी हैप्पी विद ऑल द प्रॉब्लम्स. ऑल वाइफ्स, व्हेन यू लुक एट योर हस्बैंड, बोलो उसको आई विल स्टिल बी हैप्पी.
We missed you, but happy that you're back. Oh yes, I also missed you, Tej. Got a way to happiness. Yes. And the admissions are on for my life. Those who have done Life 360 with me, you want to spend, you want to invest your time with me in the lap of Himalayas, Devbhumi में अगर समय बिताना चाहते हो, then be there for my life. We have the registration started for my life, and it's in the month of August. Yes, there it is. It's in the month of August from 20th to 25th of August in Uttarakhand. And उसके लिए हमारी seats पहले से भर जाती हैं because it's an outstation program. We have travel and logistics and things like that. तो आओ मेरे साथ experience the best of spiritual life in a very simple way. MG के style में I'll teach you spirituality. I will make you experience spirituality. And chalo, love you all for being there, and let's make this world a better place. Let's implement what we have learned, what we have picked up, and let's get in as many people as possible for Happy Minds. ये आने दो जनता को, सुनने दो, let them become better. Relatives, friends, wife, husband, सासू माँ, सबको लेके आ जाओ. Let them all be a part of this ever seeking, evolving fraternity. Chalo, God bless you all. I'll see you next HM with another beautiful subject.